वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे B.Sc ऑनर्स पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट डाइन्स। तो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन कि डाइन्स क्या हैं। व्हाट आर डाइन्स? द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing two carbon-carbon double bonds are called dienes. We call them alkadienes also and diolefins. The general formula of dienes is CnH2n minus 2. Alkadienes are isomers of alkynes. अब देखते हैं nomenclature part. The systematic name of alkadine is derived from the corresponding alkane by replacing the terminal Ne by diene. तो एल्केन माइनस Ne प्लस diene डाइन गिव्स एल्काडाइन। एल्केन में से Ne हटाइए और diene लगाइए, एल्काडाइन बनता है। अब हम पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइन्स। इसके लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज सेलेक्टेड। सेकंड है द कार्बन चेन इज नंबर्ड in such a manner that the double bonded carbon atoms get lowest possible numbers. और थर्ड है the position of double bond in the chain is shown before suffix diene. तो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिया है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं तो और 2 डबल बॉन्ड्स हैं जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है। तो जो नाम है वो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3-डाइन। Now let us study the classification of डाइन्स। तो डाइन्स 3 तरह की होती हैं। क्यूमुलेटेड डाइन्स, संचयी डाइन्स, दूसरी कॉन्जुगेटेड डाइन्स या संयुग्मित डाइन्स, और तीसरी आइसोलेटेड डाइन्स या विलगित डाइन्स। तो एक एक करके इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। Depending upon the relative position of two double bonds, the alkadienes are classified into 3 groups. तो सबसे पहली है cumulated dienes. In this, 2 carbon-carbon double bonds are adjacent to each other. Or we can say 1 carbon atom is common to 2 carbon-carbon double bonds. इसका स्ट्रक्चर देखिए क्यूमुलेटेड डाइन का। जो सेकेंड कार्बन है, द कार्बन एटम इज कॉमन टू 2 कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स। द सिंपलेस्ट क्यूमुलेटेड डाइन इज 1,2-propadiene. Now this is also called allene and the compounds of this class are called allenes. नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड डाइन्स या संयुग्मित डाइन्स। तो स्ट्रक्चर देखिए, इफ 2 कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 1 कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड और 2 double bonds are present at alternate position, then they are known as conjugated dienes.
The most common example of conjugated dienes is 1,3-butadiene. इसमें देखिए दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं। और नेक्स्ट है लास्ट इज आइसोलेटेड डाइन्स या विलगित डाइन्स। तो स्ट्रक्चर देखिए आइसोलेटेड डाइन का। इफ टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड्स दो सिंगल बॉन्ड्स से सेपरेटेड हैं and they are known as isolated dienes. The most common example is here we have shown 1,4-pentadiene. इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं relative stabilities of dienes. As we know, the relative stabilities of the substituted alkenes depend on their relative heats of hydrogenation, and the least stable alkene liberates the most heat during the hydrogenation because more energy is associated with the molecule. Similarly, the heats of hydrogenation of the different types of dienes are related with their stabilities. The heats of hydrogenation of an isolated diene 1,4-pentadiene, cumulated diene 2,3-pentadiene, and conjugated diene 1,3-pentadiene are written in this slide. So just have a look at the three equations written here and see the value of heat of hydrogenation in all the three cases. So we can see that the heat of hydrogenation of 2,3-pentadiene cumulated diene is greater than the heat of hydrogenation of 1,4-pentadiene isolated diene, which in turn is greater than the heat of hydrogenation of 1,3-pentadiene conjugated diene. So thus, on the basis of the relative heats of hydrogenation of pentadienes, it can be concluded that conjugated dienes are more stable than isolated dienes, which in turn are more stable than cumulated dienes. So the order of relative stabilities of the dienes is conjugated dienes more stable, then comes isolated diene, and then cumulated diene least stable. Thank you so much.